Hello, namaskar. Welcome to Pristine IAS. So, in today's lecture, we will study about carbohydrate metabolism, जोथिरे कि both the process of digestion and absorption दिटांग जिनसे हम पढ़िबा. So, OPSC mains रे it is a common question कि से माने either carbohydrate रो digestion और absorption पचारिबे नहले fat रो नहले protein रो and you can say कि तीनटा भितर गोटे क्वेश्चन तो कंपलसरी each year आछी आ आसीबो. And apart from that, केबे केबे से दीटा क्वेश्चन भी पचारन जे लाइक इन OCS 2023 दुटा केबे हितला दुटा 2025 रे हितला. In that year they asked two questions, गोटे थिला प्रोटीन गोटे थिला फैट. फाइन. So आर्थर माने लास्ट ईयर भी पचारथिले 2024 भी पचारथिले. So this year also they will ask. So in today's lecture we will complete carbohydrate. Next lecture रे हमें फैट और प्रोटीन कंप्लीट करिवा. So देखो the carbohydrate digestion takes place in okay ମୁଁ बहुत simple ରେ କହିବି, just pay your attention. ठीक, I will explain everything. ଆଉ ବହୁତ easy ଏଟା understand କରିବା. କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି that you need to write down on your note. ठीक, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ you will completely understand the thing. I will make it sure कि ତମେ ଯେମିତି ଏ concept କୁ ଠିକରେ ବୁଝି ପାରିବ. Fine. So let's start. Carbohydrate metabolism किंबा आम स्टार्ट करवा डाइजेशन देन विल टॉक अबाउट द अब्जॉर्प्शन. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन चार्टा स्टेज रे हुए और हम कहबे चार्टा प्लेस रे और वी कैन राइट इट हैपेंस एट 4 स्टेजेस. ठीक, जस्ट 1 मिनट. वी कैन से दिस हैपेंस इन जस्ट ओके केतरा रे 4 स्टेजेस. कौन कौन से स्टेज उठला तमर माउथ आम जतो खाइबा माने चोबुचंदी चुइंग कोडिया स्टार्ट करचंदी that says only carbohydrate digestion start होची. again in stomach आम स्टोमक रे देखिबा केमती एक्चुअली एटा गोटे स्टेज बट स्टोमक रे एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हुएनी बट एटी किछि समय पे हॉल्ट हुए. फाइन. एंड इन द थर्ड स्टेज दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रे ऑलमोस्ट डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आउ जहाँ किछि बाकी था दैट कंप्लीट्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. बुझी पारला चारटा जगह रे आमर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होबो. स्टार्ट फ्रॉम माउथ देन स्टोमक रे हॉल्ट होबो. स्मॉल इंटेस्टाइन रे ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड. लार्ज इंटेस्टाइन रे जहाँ बाकी थिबो दैट विल बी कंप्लीट. फाइन. सो विल स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ. जेते हम दे लिखा है जेटी माउथ रे स्टार्ट होबो. व्हेयर सैलिवरी अमाइलेज ମୁଁ କହିବି କ'ଣ salivary amylase break down starch into maltose and dextrins, passes through stomach where the acidic condition halt the amylase activities, and in small intestine the digestion process and it complete in large intestine. ठीक, देखो कौन होबो प्रथम माउथ रे कौन होबो हमें जेतल खाइबा नै कि चुई करिबा चोबेबा एतल खाइबा को सेतल हमर जो salivary gland अछि सेठुरु salivary amylase will released. कौन हम जो आम खाद्य को चोबेबा और जो फूड को आम चुई करवा कौन हम सालिवरी ग्लैंड रु सालिवरी अमाइलेज विल रिलीज. दिस सालिवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द पॉलीसैकेराइड्स. आम जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ी से पढ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ ओके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आम मोनोसैकेराइड पढ़ी आम डाइसैकेराइड पढ़ी and also we study about polysaccharide. mono माने गोटे डाई माने दीटा जोटी दीटा monosaccharide मिसिक थिबे that will be di and poly means where more number of monosaccharides are mixed. ठीक, जेतल दुई रु अधिक monosaccharide थिबे that will termed as polysaccharide. तो माउथ रे कोन होबो जेतल आमे खाद्य को चोबेबा the salivary gland releases salivary amylase. It is an enzyme which breaks down the polysaccharide that is starch. ठीक, स्टार्च को जोटा आम पॉलीसैकेराइड बोली कहते हैं ब्रेक डाउन कर माउथ रो बस एति काम अच्छी. नेक्स्ट जी आम कोटी की स्टोमक. देखो स्टोमक रे आम जो खाद्यटा चोबेले ओके जो फूड पार्टिकल्स रहा सहित तो सालिवरी अमाइलेज मिसीज. सालिवरी अमाइलेज जोटा कि आम देखले सालिवरी ग्लैंड रो रिलीज होता जिते ये दुटा जिन मिसीजे दे विल टर्न एज काई.
CHYME ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କାଇମ୍ CHYME କାଇମ୍ तो काइम विल गो और काइम विल मूव टू स्टोमक थ्रू एसोफागस एसोफागस माने जो खाद्य नळी अछि हमर फाइन आमे जो खाद्य नळी अछि जस्ट 1 मिनिट जो खाद्य नळी अछि ठीक ए जो एरिया टा हम देखचंदी ए एरिया टा ए थ्रू रे कोन हो फूड टा हमर स्टोमक को जीवो स्टोमक को जेतले जाय के हमर फूड पहुंचीबो कार्बोहाइड्रेट ता भीतर गोटे एसिड रिलीज हबो जोटा कि आमे कोन HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक अच्छे HCl मुझे लिखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो pH केते अछि 1.5 टू 2 आमे जानि चंदी जेतबेले pH स्केल रे 0 रु नेकी अप टू 7 पर्यंत जहा रहबो दैट विल बी एसिडिक तास परे जति सेटा सब बेस तो 0 पाखा पाखी जेते अधिक रहइबो सेते अधिक एसिडिक तो HCl रो pH केते होछि pH होछि 1.5 टू 2 भितरे जो एते अमाउंट रो सेटा एसिड अछि it will inactivate the salivary amylase आमे देखिले salivary amylase जोटा ब्रेकडाउन करथिला पॉलीसैकेराइड को जोटा salivary gland रो रिलीज हेतिला तारो एक्शन को इनएक्टिवेट कर दबो के HCl तो सेति पई the process of digestion in stomach is halted कार्बोहाइड्रेट रो डाइजेशन स्टोमक रे होबनी जे पर्यंत स्टोमक रे कार्बोहाइड्रेट पड़ी रहइबो से पर्यंत ता धरे किछि भी डाइजेशन होबनी then again the digestion starts in small intestine देखो एटा हला हमरो ह्यूमन रो आमे डिफरेंट ऑर्गन्स देखै छथि सो वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स एटा हला हमर स्टोमक जोटे हमर HCl बाहरला हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटा फूड को एसिडिक कला जेतले फूड को एसिडिक कला कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन will stop there or it will halt there when the carbohydrate will move to or हम कहि पारे जो काइम जोटा थिला जेतले सेटा मूव करिवो टू द duodenum area of small intestine एटा ला small intestine मु जो लाइन टा पकोज बर्तन दिस लाइन इज स्मॉल इंटेस्टाइन ए जोटा अछि रेड कलर दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन रो duodenum area and ileum area is important duodenum area होची कोटा दिस पार्ट जोटी हमर कोन होबो जोटी स्मॉल इंटेस्टाइन रो स्टार्टिंग पास जोटा स्टोमक रू फूड मूव करिकि duodenum area को जीवो बुझि परलो जेतले duodenum area को जीवो सेतले कोन होबो at the duodenum area the chyme and pancreatic amylase सेटे हम पढ़थिले कोन सेटे हम पढ़थिले salivary gland रू बाहरतिला एठी कोन हम पढ़चंदी एठी हम पढ़चंदी pancreatic amylase एटा कोड बाहरतिबो pancreatic amylase will be released from where obviously from pancreas एटा pancreas रू ही आसीबो फाइन pancreas रू जो pancreatic amylase आसीबो that will mix with chyme ठीक salivary amylase तो ऑलरेडी सिटी HCl ताको स्टॉप कर देथिला ताको इनएक्टिवेट कर देथिला नाउ द काइम विल बी ओके मिक्स्ड काइम रे देखो सिटी से ताको इनएक्टिवेट करथिला बट एबे भी सेटा कोन इनएक्टिवेट हे जाइतिला बट सेटा तो तादर से मिसिक अछि ना तो काइम नाउ मिक्स्ड विथ pancreatic amylase which is released by the pancreas रू pancreatic amylase सहित काइम मिसिबो काइम मिसला परे काइम मिसला परे आरो काम स्टार्ट हो कार काम स्टार्ट हो pancreatic amylase रो काम स्टार्ट हो pancreatic amylase कोन करिवो जोटा पॉलीसैकेराइड थिले ताको डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करिवो बुझि परलो pancreatic amylase जहाँ भी पॉलीसैकेराइड थिबो इन द फूड और इन द कार्बोहाइड्रेट ताको से कन्वर्ट करिवो डाइसैकेराइड को भी आम बॉडी ताको अब्जॉर्ब करि परियोनी बट जदि आमे डाइसैकेराइड को ब्रेक करके मोनोसैकेराइड को नहीं आसीबा ठीक अछि जदि आमे डाइसैकेराइड को ब्रेक करके मोनोसैकेराइड को नहीं आसीबा इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ ठीक स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविली वगैरह अछि दे कैन अब्जॉर्ब इट तो पॉलीसैकेराइड रे डाइसैकेराइड हे गेला वर्तमान द नेक्स्ट टास्क इज टू ब्रेक डाउन द डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड ठीक डाइसैकेराइड रू मोनोसैकेराइड को ब्रेक करिया पई आम पाखरे तीन प्रकार डाइसैकेराइड अछि जोटा को हम ब्रेक करिया गोटे हला लैक्टोज गोटे हला सुक्रोज गोटे हला माल्टोज ठीक अछि आमको तीन प्रकार डाइसैकेराइड को कंसीडर करिवार अछि जहा को हम ब्रेक डाउन करिकि मोनोसैकेराइड को कन्वर्ट करिवा एंड व्हाट आर दोस गोटे हला लैक्टोज सेकंड वन इज सुक्रोज थर्ड वन इज माल्टोज सिमिलरली ए जो तीन प्रकार आमे डाइसैकेराइड कहले ताको ब्रेक करिया पई
तीनटा एंजाइम विल वर्क किए लैक्टेज माल्टेज सुक्रोज लैक्टोज को ब्रेक करियो लैक्टेज सुक्रोज को ब्रेक करियो सुक्रेज माल्टोज को ब्रेक करियो माल्टेज ओके एटी ओ अच्छी सेठी ए अच्छी दैट्स द डिफरेंस एटा सब कोन एटा सब ले डाइसैकाराइड मन रखियो दीज आर द डाइसैकाराइड्स ताकू ब्रेक करिया पई लैक्टेज माल्टेज सुक्रेज ए सब ले एंजाइम्स ठीक जेतोले हमें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करिबा बाय द हेल्प ऑफ लैक्टेज इट विल गिव वन ग्लूकोज वन गैलेक्टोज फाइन जेतोले लैक्टोज को ब्रेक डाउन करा जिवो by using the enzyme lactase it will give rise to one glucose and one galactose similarly जेतोले हमें सुक्रोज को ब्रेक डाउन करिबा by the help of sucrase it will give one glucose one fructose just see these 2 point lactose और sucrose को जेतोले हम ब्रेक डाउन करचंती ग्लूकोज विल बी कांस्टेंट एठी गोटे ग्लूकोज एठी गोटे ग्लूकोज लैक्टोज रु तमर गोटे गैलेक्टोज आसीबो सुक्रोज रु गोटे तमर फ्रुक्टोज आसीबो when we break down the maltose को ब्रेक डाउन करिया पई we will use maltase as the enzyme maltose को ब्रेक डाउन करिवा पई आमे maltase enzyme को यूज करिबा which will give rise to 2 glucose ठीक अछि तीनटा हमर डाइसैकाराइड थिला एबे सबु जति एबे देखुजो all these are monosaccharides glucose galactose monosaccharide glucose fructose again monosaccharide and here 2 glucose particles ठीक अछि एटा हला स्मॉल इंटेस्टाइन ने ऑलमोस्ट काम हो गला ठीक एंजाइम सच एज लैक्टेज माल्टेज सुक्रेज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन द डाइसैकाराइड टू मोनोसैकाराइड्स फाइन लास्ट हम देखिबा लार्ज इंटेस्टाइन ने कोन होबो जो कार्बोहाइड्रेट रो जो स्टार्च अछि व्हिच इज नॉट डाइजेस्टेड और नॉट अब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड माने यदि एमिति किछि कार्बोहाइड्रेट अछि जोटा कि पॉलीसैकेराइड तो ऑब्वियसली होबो समथिंग लाइक स्टार्च ठीक देखो आमे यदि माने गछर पत्र को आमे खाइबा वी कैंट डाइजेस्ट इट बट गछर पत्र तो गाई माने खाउछन से डाइजेस्ट कर दोचंदी छेली भी खाइ कि डाइजेस्ट कर दोची they can digest because they have the certain kind of enzymes which can break down such starch and it can able to digest आम प्रकार से प्रकार किसी आम बॉडी रे से प्रकार किसी एंजाइम नहीं जोटा कि एते कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किंबा आम कहि परिबा एते जोटा स्टार्च अछि कि हाई फाइबर कंटेंट अछि ताकू आम बॉडी डाइजेस्ट करि परिबोनी तो जो carbohydrate which is not digested and not absorbed in the small intestine they will move to the colon area of large intestine बुझिपालो माउथ तुम देखुची एटा हमर कोन हला एटा हमर स्मॉल इंटेस्टाइन तो एठी जहा माने डाइजेस्ट हे कि अब्जॉर्ब होगता हे गला जहा न होई परला दैट विल मूव टू दिस लार्ज इंटेस्टाइन ठीक लार्ज इंटेस्टाइन ने कोन होबो लार्ज इंटेस्टाइन ले गोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट थाए दैट इज नोन एज योर ओके इंटेस्टिनल बैक्टीरिया फाइन आमे कोन कथा हले जो स्टार्च और हाई फाइबर कंटेंट और द कार्बोहाइड्रेट which is not digested nor absorbed in the small intestine will move to the colon area of large intestine no colon area को से move करिवो and the intestinal bacteria that is present in the large intestine will break the carbohydrate and it will excrete with the feces माने जेतले ओके फिकल मैटर सहित सेटा हमर बॉडी रु एक्सक्रीट हे भारी पळेबो बुझि परलो जोटा नॉट डाइजेस्टेड नॉट अब्जॉर्ब्ड carbohydrate that will reach to the colon of large intestine रे जो intestinal bacteria अछि that will breaks the carbohydrate जोटा आमे एठी कथा होतले जोटा डाइजेस्ट हेनी जोटा अब्जॉर्ब हेनी ताको ब्रेक डाउन करा जिवो ब्रेक डाउन होला परे इट विल एक्सक्रीट थ्रू द फेसेस fecal matter सहित हेटा हम बॉडी रो बाहर जिवो दैट इज वन पार्ट हियर वी कंप्लीट द डाइजेशन नेक्स्ट पार्ट अछि क्वेश्चन रे ऑलमोस्ट एटा 15 मार्क क्वेश्चन आसीबो 15 मार्क क्वेश्चन हमको दीटा पार्ट को एड्रेस करिया पड़िबो वन वी टॉक्ड अबाउट डाइजेशन सेकंड प्रोसेस इज अब्जॉर्प्शन तो अब्जॉर्प्शन भी बहुत बड़ जिंस नु तुमको किछि जिंस मन रखिया पड़िबो एंड द गेम इज ओवर ठीक सो इन अब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमको तीनटा मेन जिंस ऊपर फोकस करिया पड़िबो
one is ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଟିକେ ଓକେ ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଇଟ୍ ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ absorption the monosaccharides are absorbed in small intestine जोटा ब्रेकडाउन କରିବାର ଥିଲା पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड को हम ब्रेक कले अगेन डाइसैकेराइड को आम ब्रेक करके मोनोसैकेराइड कले आउ मोनोसैकेराइड वेयर absorbed in the small intestine ठीक अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन absorb हो गले देन द ग्लूकोज एटा हम देखिया केमिति absorb होचंती आमे पढिथिले कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एटा कोड आस्थिला जस्ट सी लैक्टोज को जतले हम ब्रेक डाउन कले आमे कोन मिलला ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फाइन दिस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंटर द एंटेरोसाइट्स मो बर्तन कहबी व्हाट इज एंटेरोसाइट enter the enterocyte via SGCT1. What is SGCT1? That is your sodium glucose co-transporter 1. बुझिपार कौन से सोडियम ग्लूकोज co-transporter 1 using active transport with sodium जो आम प्रोटीन डाइजेशन पढ़ा से डिटेल पढ़ा जो प्रोटीन डाइजेशन पढ़े तादरे भी अच्छी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम केमिति द पोटासियम एंड ओके सोडियम आयन केमिति एक्सचेंज होचंदी सेठी हमें पढ़िबा सो इट इज जस्ट मन रखियो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंटर द एंटेरोसाइट वाया SGCT1 व्हिच इज योर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ सोडियम देखो एंटेरोसाइट कौन आई विल शो यू सी हियर एंटेरोसाइट दिस इज द ओके एटा माइक्रोविली जो द्वारा सेटा absorb हम फाइन ता तले अच्छी जस्ट तुम एंटेरोसाइट केमती अच्छी एंटेरोसाइट आज स्पेशलाइज्ड सिंपल columnar epithelial cells that line inner surface of the small and large intestine okay these are used to absorb जोटा में ग्लूकोज हो गला फ्रुक्टोज हो गला गैलेक्टोज हो गला किंबा अमीनो एसिड्स आसीबो ताकू कौन करिया पे ताकू absorb करिया पे ठीक ताको absorb करिया पे एठी तमर थिबो एंटेरोसाइट एंटेरोसाइट रो सरफेस एरिया बढ़िया पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थिबो दीज आर नोन एज द माइक्रोविलेज ठीक अछि एंटेरोसाइट आर स्पेशलाइज्ड सिंपल columnar epithelial cells that line the inner surface of the small and large intestine small और large intestine रो भीतर एरिया थांती to absorb the carbohydrate or protein or fat से जहाँ भी ओके जेमती ग्लूकोज आसला फ्रुक्टोज आसला सुक्रोज आसला ओके और गैलेक्टोज आसला ताकू सुक्रोज तो होबनी जोटा आम कारण से डाइसैकेराइड ना मोनोसैकेराइड हला परे जेतले ब्रेकडाउन हो गला किंबा जेतले प्रोटीन अमीनो एसिड को ब्रेकडाउन हो जिवो ताकू अब्जॉर्ब करिया पे दिस एंटेरोसाइट्स इज रिक्वायर्ड ठीक एते डिटेल दिया दरकार नहीं जस्ट मन रखियो एंटेरोसाइट बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग मेडिकल हमको केवल होम साइंस जी लिखार अच्छी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ओनली एटा बहुत नहले बहुत डीप हो सो जेहेतु टिके गोटे तुम आइडिया आसो दैट्स व्हाई आई शो यू द डायग्राम बट एग्जाम रे एसो डायग्राम किछि करियार नहीं एग्जाम रे तुमको एसो डायग्राम किछि करियार नहीं आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन डू तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हो गला दे एंटर द एंटेरोसाइट दिस इज स्पेलिंग मन रखियो glucose and galactose enter enterocyte via SGCT1 that is sodium glucose co-transporter 1 using active transport with sodium fine प्रथम जिनस हो गला सेकंड ला फ्रुक्टोज आमे देखते रेटी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज थिला कोथरे थिला ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज जे थिला सुक्रोज कोन अछि फ्रुक्टोज भी तो अछि ग्लूकोज तो हो गला फ्रुक्टोज कथा कोन fructose is absorbed via GLUT5 what is GLUT5 that is हमको एठी आउ दिटा जिंस मन रखिया पड़ियो GLUT5 आउ GLUT2 that is glucose transporter मु लिखि दउ चिटी GLUT हला तमरो कोन जस्ट गोटे लाइन दियो लिखा अछि ओके दिस इज योर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अगेन देयर इज 5 टाइप्स 1 2 3 4 5 अलग अलग फंक्शन अछि ठीक माने अलग अलग कोटा ब्रेन रे काम करछि कोटा किडनी से काम करछि बट अगेन दैट विल बी मेडिकल टर्म हमकु केवल जति की दरकार सेति हम मन रखिया फ्रुक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड यूजिंग GLUT5 दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5
all three monosaccharide exit enterocyte through GLUT2 कौन है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 देकी सब मोनोसाक्राइड गुड़ा एंटरसाइट रू बाहरी की एंटर करिवे टू द ब्लड स्ट्रीम एंटरसाइट रू बाहरले बाहरी से कोड जिवे दे विल मूव टू द ब्लड स्ट्रीम बुझि पारलो ब्लड स्ट्रीम रे जदी से पहुंची गले नाउ in the liver fructose and galactose are converted into glucose which then circulates to provide energy जब ब्लड स्ट्रीम में मिसी गले से अलग अलग पार्ट्स को जिबे जोटी एनर्जी दरकार थिबो अगेन दे विल बी ब्रोक डाउन ठीक अछि एटीपी सेल वगैरह बहुत जिंस अछि जेतोला हमें फैट किंबा प्रोटीन ने मोस्टली विल स्टडी फ्यू अदर डिफरेंट थिंग्स सेतोले आउ टिके कांसेप्ट क्लियर हो तो ये जमी मुझे कहली मन रखियो डाइजेशन चार्टा प्रोसेस होची कौन कौन होची मन रखियो माउथ रे कौन होची फास्ट लिखिबो तापर तुम देखियो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्टोमक रे केमिति सेटा बंद होची बाय द एक्शन ऑफ HCl तापर ड्यूडेनम एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रे कौन कौन प्रोसेस होची केमिति पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड रे ब्रेक डाउन करा होची एंड व्हाट आर द एंजाइम्स दैट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड हे गला तापर लार्ज इंटेस्टाइन हम देखिया जोडा बंची गला कार्बोहाइड्रेट जोटा हमें कहउचंती कि they are not absorbed or not excuse me not digested or not absorbed they reach the colon area जोटी कि intestinal bacteria will break down it fine absorption तुमको तीनटा जिंस मन रखियार अछि गोटेला SGCT1 GLUT5 आउ GLUT2 ग्लूकोज आउ galactose पे GL सॉरी SGLT1 फ्रुक्टोज पे GLUT2 आउ GLUT5 आउ GLUT2 टा कोन पे जीवो GLUT2 is used to exit the enterocytes and enter into the bloodstream. That's all. एतिक जिनस हम लिखियार अछि and if you want to draw a okay exam रे जदी करियार अछि you can use this one. जहा हम कहली एथरे माने डायग्राम करा है जी so you just do this thing it's over. ठीक एतिक जिनस करियार अछि I hope कि it is helpful to you. Fine. So next class I will study about the fat and protein hopefully okay this is a free video again but for fat metabolism and protein metabolism that will be uploaded in our uh, okay paid batch group रे जो बन अछंती only for them and next देखिबा हाउ किसी यदि फ्री वीडियो आनी हबो we will try to bring it out but सब दिन तो देई होनी जति का मैं will try कि जति की वीडियो देई हबो we will put it in free and others are reserved for our paid batch students okay so thanks for watching the lecture have a great day